Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and we are continuing with our chapter Planning and Sustainable Development. So friends, earlier हमने different kind के development programs के बारे में जाना जो कि start किए गए थे under target area planning और उसी के अंडर हमने लास्ट में इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरियाज के बारे में जाना और वो स्टेप्स के बारे में जाना, उन मेजर्स के बारे में जाना। तो आइए चलते हैं आगे अपने सफर पर। तो मेजर्स ऑफ प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया की बात करते हैं, क्योंकि अर्लियर हमने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया जो है राजस्थान कनाल के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, लाखों हेक्टेयर लैंड को उसने इरिगेट किया है। लेकिन इसके साथ साथ इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने क्रिएट की हैं और उन प्रॉब्लम्स के कारण ही बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। And now there is a question of sustainability of Indira Gandhi Canal Command area and there should be measures of promotion of sustainability। इस बात के ऊपर भी स्कॉलर्स ने जोर दिया है। तो आइए बात करते हैं उन मेजर्स की। So friends, the first requirement is to strict implementation of water management policy to avoid the problems, to solve the problems. And friends, water intensive crops shall be avoided. People shall be encouraged to grow plantation crops like citrus fruits. And friends, the CAD, the command area development programs such as lining of water courses, land development, etc. shall be effectively implemented to solve the problems. और क्या measures हो सकते हैं? The areas affected by waterlogging and soil salinity shall be reclaimed. And friends, eco-development plans shall be encouraged. For example, afforestation, pasture development, shelter belt plantation, etc. And friends, land allottees having poor economic background shall be given financial help and institutional help for cultivation of land. And friends, agricultural and allied activities have to be developed along with other sectors of economy. तो इन मेजर्स को जब हम अपनाएंगे तो हमारी सस्टेनेबिलिटी जो है इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया के अंदर और भी स्ट्रेंथन होगी। एंड फ्रेंड्स, स्टेप्स जो हैं which should be taken to solve the problems: lining of water courses, leveling of Varabandi, reclamation of waterlogging areas, afforestation, shelter belts, adequate financial support to the economically weak regions and weak people. They should be a good steps, or we can say measures. एंड फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अगर हम सोशल बेनिफिट्स की बात करें इन द भारमोर ट्राइबल रीजन्स, तो वो सोशल बेनिफिट्स हैं: द गद्दीज ऑफ भारमोर वर इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ गद्दीज वाज आल्सो इम्प्रूव्ड and the gap in the level of development between Bharmore and other areas of Himachal Pradesh also declined. And friends, this plan led the highest priority on development of transport, communication, agriculture and allied activities. बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इरिगेशन ऑन इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया। तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहे इसके? There was a clear transformation in the agricultural economy of this region. Spread of canal irrigation had led to increase in cultivated area and intensity of cropping due to irrigation. And friends, the traditional crops sown in the area, gram, bajra and guar fodder, have been replaced by wheat, cotton, groundnut and rice. And friends, it resulted in the increase in agriculture and livestock productivity. And friends, sometime there is a question: write a short notes on drought prone area program and agroclimatic planning.
How do these programs help in the development of dry land agriculture in India? तो हम बात कर रहे हैं just like drought prone areas की. This program was initiated during the 4th 5-year plan with the objectives of providing employment to the people in drought prone areas. It aims at creating productive assets to decrease the effects of the droughts. And it also emphasizes on integrated development of that area, land development program, afforestation, grassland development and rural electrification, etc. बात करते हैं एग्रोक्लाइमेटिक प्लानिंग की, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो एग्रोक्लाइमेटिक प्लानिंग क्या है? एग्रोक्लाइमेटिक प्लानिंग मीन्स दैट क्रॉप रेजिंग शुड बी प्लान्ड इन अ वे दैट इज फ्रेंडली टू क्लाइमेटिक कंडीशन. Rice, sugarcane and other water needing crops should be preferred in the areas where proper rainfall is received. In moderate rainfall areas, crop like wheat etc. should be planned to be raised. In water scarcity areas, due to scanty rainfall, ज्वार, बाजरा etc. may be raised. तो एग्रोक्लाइमेटिक प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जहां पर बारिश ज्यादा है उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पे क्रॉप लगाते हैं. जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा कम है, ड्राई रीजन्स हैं, वहां पे हम ड्राई रीजन्स वाली क्रॉप्स को लगाते हैं. और जहां पे मॉडरेट रेनफॉल है या मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी है, वहां पर हम उसी तरह की क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं. इट इज कॉल्ड एग्रोक्लाइमेटिक प्लानिंग बिकॉज वी आर प्लानिंग विद द क्लाइमेट. And friends, the above programs will boost dry land farming in the country. And overview की बात करें तो describe the overview planning of planning perspectives in India. तो different types के problems को sort out करने के लिए different times पे जो planning commission बनाए गए उसके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट 5-year plans की बात करें तो फर्स्ट 5-year plans was launched in 1951 and covered the period from 1951 to 52 to 1955 to 56. Second and third 5-year plan covered the period from 1956 to 57 to 1960 to 61 and 1961 to 62 to 1965 to 66 respectively. प्लान हॉलीडे की बात करते हैं. 2 successive droughts during mid-60s and war with Pakistan in 1965 forced a plan holiday. 1966 to 67 and 1968 to 69. So they were referred to as plan holidays. Rolling plans. This period was covered by annual plans which are also termed as rolling plans. And the fourth 5-year plan began in 1969 and ended in 1973. And friends, fifth 5-year plan की बात करें, which was began in 1974, but it was terminated by the then government 1 year earlier in 1977. Sixth 5-year plan took off in 1980. Seventh 5-year plan 1985 to 1990 and 8th 5-year plan 1992 to 1997. 9th 5-year plan was started in 1997 to 2002 and 10th 5-year plan 2002 to 2007. And friends, 11th 5-year plans started in 2007 AD to 2012. And 12th 5-year plan in 2012 to 2017, and the new name of the planning commission named as Niti Aayog by Narendra Modi. तो क्या नया नाम दिया गया इसको? नीति आयोग in the 12th 5-year plan. And friends, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं. क्वेश्चन है,
Mention one measure of promotion of sustainability in Indira Gandhi Canal Command area. What is the full form of ITDP? Mention one social benefits of integrated tribal development program in the Bharmor tribal region. What does agroclimatic planning mean? And the last question is, in which year first 5-year plan was launched? So friends, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद with the new module of the new chapter. God bless you.